Acha, Bismillahirrahmanirrahim. These was the topic which was we previously discussed in the class. Training and development key components of learning. ये हमने डिस्कस किए थे. If you people remember, तो training facilitates learning, job related competencies, skills, knowledge or behavior. ये हमने बात की थी. We were discussing about KSA. If you people remember it, तो we discussed the knowledge, skills and abilities. And as well as I also discussed with you the AMO model. The AMO model explained the ability, motivation and opportunity. तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और ये हमने इसमें जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद दी ट्रेनिंग्स ये भी हमने देन ये भी हमने बात की थी. एक्सप्लिसिट नॉलेज की भी बात की थी. ऑल दोज जो वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, इजीली आर्टिकुलेटेड होते हैं, इजीली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं from one person to another person. So this is related with the explicit knowledge. Tacit knowledge मैंने बताया था आपको कि based on your personal knowledge and as well as on your experiences, that is difficult to codify the result of the informal learning. तो ये हमने बात की थी. नॉलेज मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बड़ा डीपली और बड़ा डिटेल्ड बताया था. ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी. नाउ गोइंग फर्दर, designing effective training, to training design process, systematic approach for developing training programs based on the principles of instructional system design, ISD. instructional system design के principles की base पे जो है हम बात करते हैं और हम इसको लिंक करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है. बेसिकली ADDIE मॉडल जो है वो क्या चीज़ होता है, वो है बेसिकली एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवैल्यूएशन मॉडल जिसको हम कहते हैं. हम एनालिसिस करते हैं पहले. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सैफुल्ला जी बताओ, सैफुल्ला आप क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, ये खातिरुल्ला को कोई असिस्ट कर दे. खातिरुल्ला को जो है आवाज नहीं जा रही, आई डोंट नो क्या है, इसको कॉल करके कोई असिस्ट कर दे प्लीज. अच्छा, then should be a systematic yet flexible to adapt to business needs. Analysis, design, development, implementation and evaluation पे मैंने last time बात की थी. We were discussing about the training needs पे मैंने बात की थी. The training needs क्या होती है, how would the company evaluate the training needs. उस training needs को जो हम analyze करते हैं ना, वो सबसे पहला stage होता है analysis का. Then based on the analysis, but before going for the analysis, you first design or develop a model where you can go for the need assessment, जिसको हम need assessment कहते हैं, या we talking about a need identification. ये सारी चीजें उसके साथ लिंक्ड होती हैं. एंड मैंने आपको बताया था कि जो नीड असेसमेंट्स होती है, या इफ यू रिमेंबर इट, ये जो हम बात करते हैं इसकी नीड आइडेंटिफिकेशन की, तो ये बात होती है बेसिकली विजन के साथ. तो वो चीजें हमने जो बात की थी तो वो एनालिसिस के साथ लिंक्ड हो जाती है. एंड देन गोइंग आफ्टर द एनालिसिस यू गो फॉर द डिजाइनिंग, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग मॉडल or what kind of the training technique we would use to give them proper learning perspective. जो हम learning उसको देना चाहते हैं, employees को देना चाहते हैं, वो design develop करना. Either we go for the interactive training, either we go for the one way communication, either we go for the such kind of a training where we can just give them the handouts and the participants or the trainees can just read that handouts and they come up with their own idea, they come up with their own suggestions, they come up with their own you can say that approaches, so they can discuss it with the trainer after reading the handouts. तो ये भी होता है, प्रायरली दी जाती हैं, हैंडआउट्स दे दी जाती हैं और वो फिर ट्रेनीज पढ़ के आते हैं और फिर वो ट्रेनीज जो हैं वो ट्रेनर के साथ डिस्कस करते हैं. एंड देन द डेवलपमेंट पार्ट ऑब्वियसली वही होता है कि जब ट्रेनिंग्स दे दी जाती हैं तो आफ्टर द ट्रेनिंग्स जो चेंज आता है ट्रेनीज में, इंडिविजुअल्स में, उसको हम डेवलपमेंट पार्ट कहते हैं. देन इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज होती है? इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था, इम्प्लीमेंटेशन यही होता है कि जब ट्रेनिंग्स ले लेते हैं 1 month के लिए, 2 months के लिए, 3 months के लिए, just for 1 day trainings or just for 2 days workshop,
a 3 days workshop, whatsoever the criteria is, तो वो वापस आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको यूज करना होता है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। यहाँ पे मैं एक अपनी एग्जांपल बताऊं, मैं कराची गया था जब ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे टाइमिंग्स को उन्होंने इस तरह से मैनेज नहीं किया था कि इफेक्टिवली चीजें अंडरस्टैंड हो जाती। तो क्या उससे क्या डैमेज हुआ, उससे नुकसान ये हुआ, क्योंकि मैंने जिस दिन पे मेरी ट्रेनिंग थी, ऑन द सेम ट्रेनिंग डे मेरी फ्लाइट भी वापस पिशावर की थी, सेम डे पे जिस दिन मेरी ट्रेनिंग होनी थी, सेम डे पे 2 PM पे मेरी फ्लाइट थी, मैंने वापस आना था। और वो ट्रेनिंग लेट स्टार्ट हुई, वो अराउंड 10:30 इस तरह से स्टार्ट हुई, जबकि उसका टाइम 9 o'clock था, और वो उस तरह से लेट स्टार्ट हुई। जब लेट स्टार्ट हुई तो उसके मॉड्यूल्स लेट डिस्कस किए गए। जब लेट डिस्कस किए गए तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12 और 12:30 आई वाज वरीड फॉर माय फ्लाइट, क्योंकि मुझे दूसरी फ्लाइट नहीं मिलनी थी और इस तरह की मुझे टेंशन थी, मैंने पिशावर जाना था, ये चीज़ें मेरे माइंड में थी। तो मैंने ट्रेनर को कहा कि जी मेरे पास तो अब टाइम नहीं है, मैंने तो जाना है, मेरी तो फ्लाइट है, या तो मेरी फ्लाइट जो है वो रीस्केजुअल की जाए। एडमिन डिपार्टमेंट्स को वहां पे कहा, जो हमारा हेड ऑफिस था, but they told me कि जी we cannot reschedule it at this time, और you people all know that कि 2 घंटे के पहले या 3 घंटे पहले आप अपनी फ्लाइट रीस्केजुअल नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम 1 दिन का टाइम होता है या 2 दिन का टाइम होता है, उस पर फिर आप रीस्केजुअल की जा सकती है। तो वो नहीं हुआ। देन आई केम बैक टू द पिशावर, मैंने वो फ्लाइट ली, मैंने वो इनकम्प्लीट ट्रेनिंग छोड़ दी, मैं वापस आ गया। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो ब्रांच मैनेजर आस्क्ड फ्रॉम मी कि जी व्हाट यू लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग, वी सेंड यू to Karachi and you visited the Karachi and you stay there for 3 days, and now you came back, and now the time the head office called me that Mr. Zunuran is attended the meeting, and now tell him that implement that model in your branch। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे साथ तो ये मिसहैप हुआ और मैंने तो वो सारी चीज सीखी ही नहीं है, मुझे तो उसका पता ही नहीं चला कि वहां पे क्या हुआ, मैं तो उसको बीच में छोड़ के आ गया था। Then a person from the same department from the Karachi, he called me and he guided me in a way that how can you proceed with this system and how can you implement that system in your branch। तो उसने फिर मेरे 1 घंटा लगाया, उसने मुझे सिखाया और वो सारा कुछ हुआ। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रेनिंग मॉडल आप डिजाइन करते हैं या जो ट्रेनिंग आप स्केड्यूल करते हैं, वो इस तरह से स्केड्यूल की जाए कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हो सके। ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगा दिया, बजट लगा दिया उस पर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस का कोई पता ही नहीं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और जब एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन की बारी आए, ये भी ना हो कि जो ट्रेनीज थे उनको जो कुछ सिखाना था वो सीखा भी नहीं उन्होंने, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल बताई। तो ये जो चीज होती है ये बड़ा इफेक्टिवली होती है। देन इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इवैल्यूएशन आपको ये बताती है कि प्री और पोस्ट एनालिसिस जो हम करते हैं, प्री एनालिसिस जो बिफोर द ट्रेनिंग किया जाता है वो प्री एनालिसिस होता है, पोस्ट एनालिसिस आफ्टर द ट्रेनिंग होता है। आफ्टर द ट्रेनिंग एनालिसिस क्या होता है? आफ्टर द ट्रेनिंग एनालिसिस यही होता है कि जो ट्रेनिंग्स हमने दी हैं अपने एम्प्लॉइज को, क्या ये इनके जॉब डिजाइनिंग में हेल्प करती हैं कि नहीं, क्या इनके जो इंडिविजुअल्स केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इधर दैट इज अचीवेबल और नॉट अचीवेबल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जैन, और इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ हुज़ैफा, और इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द खातिरुल्लाह, इनको हमने कोई काम दिया है, इनको हमने कोई टारगेट्स दिए थे, और इन्होंने हमें कहा कि जी हमें इसकी ट्रेनिंग्स चाहिए, हमने इनको ट्रेनिंग्स भी दे दी है, बजट भी हमने एलोकेट कर दिया। आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग्स दे केम बैक टू द ऑफिसेस, now it's time to evaluate their performances, so evaluate their performances in terms of reference to their individuals KPIs। फॉर एग्जाम्पल अब उज़ैफा है, उज़ैफा का काम ये है ऑफिस में कि ये रिकॉर्ड कीपिंग करता है, रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड इसको ट्रेनिंग्स के लिए भेजा गया, ये रिकॉर्ड कीपिंग की ट्रेनिंग्स करके आ गया। अब एवेल्युएशन हमने इस बेस पे करनी है कि इसको हमने जो ट्रेनिंग्स दी थी वो क्या
रिकॉर्ड कीपिंग पे ही दी गई है कि नहीं, हमने कोई जनरल ट्रेनिंग इसको दी थी, बिहेवियरल ट्रेनिंग दी थी, एटीट्यूडनल ट्रेनिंग दी थी, या जर्नल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग दी थी। तो अगर हम इसको जर्नल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग देते हैं तो वी कंक्लूडेड विद दिस टर्म कि यार ये बंदा जो है रिकॉर्ड कीपिंग का है, इसको तो हमने वो ट्रेनिंग दी नहीं जो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होनी चाहिए थी। नो, ये तो वही रोल प्ले कर रहा है वापस जो आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले ये कर रहा था, और इसके काम में कोई एफिशिएंसी नहीं आई, इसके काम में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। दिस मीन्स दैट कि जो ट्रेनिंग्स हमने इसको दी है या जो बजट हमने इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे लगाया है वो यूजलेस हो गया। तो ये पोस्ट एनालिसिस है। तो ये एवेल्युएशन इस तरह से की जाती है, प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस इस चीज पे की जाती है। देन मूविंग फर्दर, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा देन सॉरी, अच्छा नेक्स्ट इज दी, यार ये खतरुल्ला क्या आ रहा है और जा रहा है। अच्छा, training design process. Training design process is number one is conducting needs assessment. Already explained to you, organizational analysis उसमें किया जाएगा, उसमें personal analysis किया जाता है, उसमें task analysis किया जाता है। ये मैंने बड़ा elaborate कर दिया है, well explained कर दिया आप लोगों को। मैंने class में भी if you remember it तो मैंने इसको बड़ा detail discuss किया था। If you any question you can ask from me once this presentation is completed. Second time is ensuring implies readiness for training, attitude and motivation, basic skills. This is very important. Readiness means that जिन लोगों को आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है प्रिपेयर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें एम्प्लॉइज जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग्स, in terms of their trainings approaches, they have some kind of the resistance towards the training. They're not mentally prepared and they're not would like to go for the training process because of some of the reasons, because of some fear, because of some job designing, their job structure is changing. They have the kind of the mindset, our job structure is changing, our the job dynamics is changing. So these kind of the fear can create problems for the employees as far as the trainings is concerned. So their attitude, their motivation, their basic skills is important for the trainings. As far as in some of the cases, in some of the situation where we can talk about the trainers set a module which is based on an advanced level. When they set a training module on an advanced level, so there is a possibility, there is a chance that the trainees or employees are not ready for the advanced modules. So before going for the advanced modules, you have to teach them, you have to discuss with them, thought with the previous modules as well, which can give the employees and which can give the proper setup towards the attitude and the basic skills as well. Then creating a learning environment, this is very important. Learning objectives, meaningful material practice, feedback, community of learning, modeling, program administration. So these are all the points which is covered under the learning environment, that what kind of a learning environment person has a trainer set, and how they can give the material, practical material, how they take the feedback and the serious feedback in terms of creating a learning environment. Here I can quote the example. Once we attending training with reference to the education excellency, with reference to the how to teach in the higher studies, how can you interact with the students, how can you involve the students. This was the training once I was attended. So the thing is, the trainer asked us, or the trainer guided us in terms of way that in terms of the feedback. तो वो ये हमें ये कह रहा था कि जी जो कुछ भी होगा, आप लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं उसकी हम फीडबैक आपसे लेंगे, और हम आपसे फीडबैक भी लेंगे
इन टर्म्स ऑफ कि आपने ये कितना सीखा है और कितना आप इसको अंडरस्टैंड किए, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। तो ये वो चीज होती है, जैसे उसमें आपको ये कहा जाता है कि जी आप ट्रेनिंग्स तो ले रहे हैं लेकिन इसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो ये जो एग्जामिंग पर्सपेक्टिव आपके माइंड में डाल दिया है, ये मीनिंगफुल पैटर्न्स की तरफ चला जाता है। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस एरिया को, किस स्टूडेंट्स को जो है या किन को बेसिकली ये लर्निंग मॉड्यूल्स आपने सेट किए हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसके अकॉर्डिंगली सेट होने बड़ी ज़रूरी होते हैं। Then going to the further ensuring transfer of training, self management, peer and manager support, that how much your manager is supporting you। मैंने आपको भी एग्जांपल दी कराची वाली कि जी मैनेजर ने मुझे कहा, फिर मैनेजर ने जो है मुझे सपोर्ट किया एंड देन आई अंडरस्टैंड, एंड वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो मुझे हो गई थ्रू सेल फोन, हो गई थ्रू कॉल, हो गई, लेकिन बस वो क्राइटेरिया जो था वो मीट हो गया। तो पीयर सपोर्ट भी बेसिकली यही होता है कि हाउ मच योर कलीग इज सपोर्टिंग यू, या जो आपके साथ कलीग गया था ट्रेनिंग लेने के लिए वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू आर एवेल्युएटिंग योर सेल्फ। तो द सेल्फ मैनेजमेंट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग एन एवेल्युएशन प्लान, आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स, चूज एवेल्युएशन डिजाइन, प्लान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने आपको ये बात बताई थी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही है कि आप 45,000 की ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडिविजुअल को, क्या वापस आपको वो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात है ना। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को लेके वरिड हो जाती हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई ऑब्जर्व्ड इवन इन द सिटी यूनिवर्सिटी एज वेल। हमारे यहाँ पे यही होता है कि, या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है कि हम प्रॉपरली गोल नहीं सेट करते। We don't have a proper goal available। जैसे मैंने शुरू में बताई नहीं है बात, यहाँ पे देखे ना, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कहाँ से लिंक्ड होता है? ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस लिंक्ड होता है विजन से, कि ऑर्गेनाइजेशनल विजन क्या है बेसिकली। तो वहीं से ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकलता है। आप सारे जो हैं कुछ ना कुछ जो एजुकेट अपने आप को करते हैं, या आप जो बीबीए कर रहे हैं, तो इस पे एक कॉस्ट लग रही है आपकी, बट साथ में ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन कॉस्ट भी आपकी लग रही है। आप कहते हैं जी मैंने बीबीए पे 4 लाख लगा दिए हैं, मैंने बीबीए पे 5 लाख लगा दिए हैं, व्हाटसोएवर द अमाउंट इज। तो बेनिफिट आप क्या लेते हैं? बेनिफिट आप ये लेते हैं कि आपको जॉब्स मिलती हैं। बेनिफिट आप ये लेते हैं कि आपकी लर्निंग्स होती हैं, वो लर्निंग आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। तो जो 4 लाख आप पे लगे इन टर्म्स ऑफ द जॉब्स, वो आपको रिटर्न होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर द बीबीए, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर द इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाई द इंडिविजुअल इज गोइंग फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। सेम इज द थिंग कि जी मैंने एक एम्प्लॉय पे इतनी अमाउंट लगा दी, जैसे मैंने अभी मेंशन की 45,000 लगा दी। ये 45,000 की जो कॉस्ट लग रही है, ये बंदा वापस जब ट्रेनिंग करके आएगा, ये मुझे क्या फायदे देगा, क्या बेनिफिट देगा? इसकी वजह से मेरे ओवरऑल ऑपरेशंस में या मेरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टास्क में क्या बेनिफिट होगा? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का होता है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इसको असेस करती है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इसको evaluate करती है। And nowadays is a competitive time where you need to compete with the external environment. You cannot ignore the external environment. You cannot base such a kind of a system where you cannot interact with the external system। तो देखें यहाँ पे बात आती है ओपन सिस्टम की और क्लोज सिस्टम की। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्लोज सिस्टम पे बिलीव रखती हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि दे आर काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सच काइंड ऑफ, एंड वेयर एज द अदर open system is such kind of the organization where they interact with the external environment। तो जो ओपन सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो एडेप्टेबिलिटी पे बिलीव रखती हैं। जो क्लोज सिस्टम पे होती हैं वो एडेप्टेबिलिटी पे बिलीव नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से
जो उनके बाद में भी बनी है या उनके साथ हैं, लेकिन वो उनके साथ कंपेटिटिव नहीं रहते हैं। मैंने आपको उस दिन स्पेस एक्स की एग्जांपल दी, आई कैन कोट हेयर द IBM एग्जांपल, आई कैन कोट द एग्जांपल ऑफ द एप्पल आईफोन, आई कैन कोट द एग्जांपल ऑफ द सैमसंग, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स एग्जांपल्स कि जो जितनी कंपेटिटिव हैं वो मार्केट में उतना ज्यादा आगे जा रही हैं। So these kind of the organization is basically working on cost benefit analysis, and when they analyze their benefit and when they analyze their cost, and as well as linked it with the futures prospect as well, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉइज को एडवांस करना शुरू कर देते हैं। जब उनके एम्प्लॉइज एडवांस होना शुरू हो जाते हैं तो वो कंपेटिटिव होना शुरू हो जाते हैं। when they are, हमने सुना है ना, आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं वो 500 में जाती हैं, टॉप 500 में नहीं आती हैं। उसकी वजह क्या है यार? उसकी वजह बेसिकली यही है कि उनके मॉड्यूल्स, उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर एडवांस्ड है, where your structure is not up to the standards, and your persons are not up to the requirements. So this is how you can say that ये इस तरह से linked up होता है। Then going for the another thing is selecting the training methods, traditional or e-learning. Traditional is a face-to-face interactive, and e-learning is ये जैसे अभी हम कर रहे हैं, this is also one of the example of the e-learning कि आपको वीडियोस दे दी जाएं, आपके साथ जूम पे सेशंस किए जाएं, ये सारे जितने भी आजकल मेथड्स हैं, जो कोअर्शिया जो एक मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, एक वेबसाइट है कोअर्शिया, आप में से सारों को पता होगी, आप में से कुछ ने देखी भी होंगी, उसके मॉड्यूल्स देखे भी होंगे। तो कोअर्शिया इज बेसिकली ई लर्निंग मेथड। इसी तरह से ई लर्निंग मेथोडोलॉजी जो है इंटरनेशनल कंपनीज करती भी हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल ये कराची वाली दी ना, ये कराची वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये बेसिकली यही है ना कि मैं जी गया वहाँ, उन्होंने मुझ पे एयर टिकट भी लगाया, होटल एकोमोडेशन भी दी, सब कुछ किया। वी अराउंड 60,000 50,000 तो लगा दिए होंगे उन्होंने मुझ पे उस टाइम पे, बैक 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वापस मैं जब आया तो मैंने वो जो चीज सीखी वो टेलीफोन पे सीखी। तो 60,000 जो थे वो यूजलेस थे, वो 60,000 जो कंपनी ने लगाए वो यूजलेस लगाए। वही बात, वही चीज मैंने टेलीफोन पे 30 मिनट्स 1 आवर में सीख ली थी। तो ई लर्निंग के थ्रू इसका मतलब यह है कि वो मॉड्यूल जिसके लिए हम कराची गए थे, वो मॉड्यूल ई लर्निंग के थ्रू सीखा जा सकता था, पैसे बचाए जा सकते थे। तो देयर आर सो मैनी मीडियम्स, देयर आर सो मैनी organizational criteria where you can set in terms of the we can say that in terms of the e-learning methodology. Then going other is the monitoring and evaluating the program, conduct evaluation, makes changes to improve the program. So ये सारी चीजें कंपनीज करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे, ये तो आपको क्लियर होगा। देन हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे जाते हैं। डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग, फ्लॉज ऑफ द ISD मॉडल, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इज रेयरली फॉलोड। इसको मैं फिर डिस्कस करूंगा, इस पे हम बात करेंगे फिर, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहे। फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग एंड लर्निंग, इकोनॉमिक साइकिल्स, ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज value placed on intangible assets and human capitals, focus on link to business strategy, changing demographics and diversity of the workforce, talent management, customer service and quality emphasis, new technology, high performance work system. These are all the points, these are all very important points where we can say that economic cycles change हो गया है, globalization है, increased value है, in terms of the intangible assets हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से लर्निंग जो है वो अब फोर्स हो रही है। These are the forcing factors where you go for the learning. You cannot say that in the 21st century we cannot give the training to the employees, that giving the trainings to the employees is the cost and we cannot afford it. It's not work in the 21st century, giving such kind of the mindset that we cannot train the peoples, we cannot give or facilitate the people, and we expect that your employees can perform like the Stanford organization, like your employees are performed like IBM workers, as well as you are not providing them the environment, you're not providing or facilitating them in terms of the quality.
You're not providing them a proper infrastructure. You're not set a proper or focus link to your business strategy, and you are expecting from your employees that your employees can perform in a better way. This is not going to work in the 21st century. This 21st century is basically a customer oriented century. It's a more a quality emphasis. It's a more based on the technology. If you don't have a technology, if you don't have a improved technology, your workers or your employees cannot perform in terms as comparatively to the others competitive organizations. तो ये नहीं हो सकता कि जी आप facilitate भी नहीं करेंगे, आप उसको trainings भी नहीं देंगे, आप उसके लिए goals भी नहीं set करेंगे, and you are expecting high from your employees. तो ये नहीं हो सकता. तो ये वो forces हैं जिसकी वजह से you can be go for the competitive. Why we are saying that कि जी हम इंग्लैंड से 100 years back हैं, हम अमेरिका से 100 years जो है पीछे हैं. उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन है, इकोनॉमिक साइकिल्स में हम पुअर हैं. उसकी यही रीजन है, जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम आता है, जो ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं. Here we are talking about changing demographics and diversity. Here in Pakistan, how many people are working in Pakistan coming from the abroad? बहुत कम लिमिटेड लोग यहाँ पे आते हैं अब्रॉड से. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन बी द रीजंस फॉर here in Pakistan there's a workforce diversity. इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में होती है. ऑफशोरिंग क्या चीज है? प्रोसेस ऑफ मूविंग जॉब्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू अदर लोकेशंस इन द वर्ल्ड. एडवांटेज इज लोअर लेबर कॉस्ट. ऑफशोरिंग यही होता है कि आप अपनी जॉब्स को दूसरी लोकेशंस के में शिफ्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है और वो उसका यूनिट जो है वो फिलीपीन में लगा हुआ है. कोई प्रोडक्शन यूनिट जो है, प्रोडक्शन यूनिट उसका फिलीपीन में लगा है, उसका कोई प्रोडक्शन यूनिट पाकिस्तान में लगा है. लेबर उसको चाहिए थी, पाकिस्तान में लेबर जो है वो इतनी कॉस्टली नहीं है. तो ये वो ऑफशोरिंग के लिए ये काम किए जाते हैं. ऑफशोरिंग में और भी होता है. ऑफशोरिंग में ये भी होता है कि आपके पास एक प्रॉपरली टेक्नोलॉजी नहीं है, एक दूसरी कंपनी के पास है, तो आपने इसलिए उसको भी दे दिया है. तो ये रीजंस भी होती हैं उसमें. ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स होते हैं. डिसएडवांटेज, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. यस, दिस इज वेरी ट्रू. इफ यू गो ऑन द इंटरनेट एंड गो सर्च द गूगल by Google, or you go by search by the YouTube, so you will find out the one of the example related with the low standard of health and safety, referring the case of the Nike. Nike का भी है और इसमें और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो स्टैंडर्ड्स को जो है लो स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो अप करती हैं. तो वहाँ पे केस था नाइकी का कि नाइकी का एक यूनिट जो था वो फिलीपीन में लगा हुआ था, और वहाँ पे जितना भी वेस्ट होता था वो जो उसके एम्प्लॉइज जो लेबर जहाँ रह रहे होते थे वहीं पे वेस्ट भी, जो प्रोडक्शन यूनिट का जितना वेस्ट मटेरियल होता था वो वहीं उसी सोसाइटी में जा रहा था. तो वहाँ जो लेबर रह रही होती थी वो पुअर लेबर थी, और उस पुअर लेबर्स को जो है मेडिकल इश्यूज आने लग पड़े. तो ये वो लो स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है. तो ये वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है. लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब. देयर इज अ पॉसिबिलिटी if the company is working in the United States और उसका one of the unit पाकिस्तान में लगा हुआ है, तो there is a possibility कि वो lack of skills होगा to perform the job. तो ये वो reasons हो सकती हैं, ये वो factors हो सकते हैं जो overall जो हैं आपकी jobs को, performance को affect कर सकते हैं. Then moving further is human capital में क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल में टैसिट नॉलेज आता है, एजुकेशन आता है, वर्क रिलेटेड नो हाउ आती है, वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी आती है, कस्टमर्स कैपिटल है, कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, ब्रांड्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं. सोशल कैपिटल में जो है कॉर्पोरेट कल्चर आता है, मैनेजमेंट फिलॉसफी आती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं. इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स में क्या आता है? पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है. ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह अलग अलग आते हैं. इसमें अपने नोट डाउन कर लें, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम इसको एंड में देखेंगे. देन इसमें क्या है? इंक्रीज वैल्यू placed on intangible assets and human capital. Human capital refers to implies attributes, life experiences, knowledge, inventiveness
and energy, enthusiasm, intellectual capital, codified knowledge that exists in a company, social capital, relationships in the company, ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से आप linked up करते हैं, then how can you value it and how can you work up. Customer capital क्या है? Value of relationships with persons or other organizations, implications of intangible assets and human capital. Nowadays there are so many companies who are focusing on the customer capital, so they trained or they develop such kind of apps, such kind of the technology where they can provide the effective customer capital utilized. If you observe it or if you see the Netflix, आप उसको देखें कभी नेटफ्लिक्स को, तो वो डिजाइन ऐसा डेवलप किया गया है, वो मैनेज किया गया है, कस्टमर ओरिएंटेडली डिजाइन किया गया है और उसको कस्टमाइज किया गया है. जो मूवीज आप उसमें देखते हैं तो उन्हीं मूवीज से रिलेटेड सजेशंस आनी शुरू हो जाती हैं आपको. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर ओरिएंटेड मॉडल बनाया गया है, ऐसी डिजाइनिंग की गई है उस ऐप की कि वो इतनी इफेक्टिवली डिजाइनिंग की गई है कि कस्टमर्स को अपने साथ वो इंगेज रखते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं, सजेशंस देते हैं. जो कोई भी न्यू मूवी आती है, कोई भी न्यू अपकमिंग्स आती हैं या कमिंग सून आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशंस भी आती हैं, पॉपअप्स आता है आपको. ये जितना भी मेथड है इसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं. बेसिकली इट्स अ डिजाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी, और ये वो डिजाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जो कस्टमर को माइंड में रख के बनाई गई है. तो ये वो वन ऑफ द इफेक्टिव टूल होता है जो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स डेवलप करता है. यू पीपल नो अबाउट इट कि ये जो हम जितना भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं वो भी कस्टमर ओरिएंटेड होता है. डिजाइन उसकी ऐसे डिजाइनिंग की गई होती है कि कस्टमर्स के साथ किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट किया गया होता है. Focus on a knowledge worker, employee engagement, degree to which employees are fully involved in their strength of employee engagement, attitude or opinion surveys, Meyer level of engagement. तो ये सारा knowledge worker पे focus किया जाता है, employees इस पे काम करती हैं. Increased value placed on intangible assets and human capital, change and continuous learning, change, adaptation of a new idea or behavior by a company, learning organization, a culture of lifelong learning enables or implies to continually acquire and share knowledge, requires financial time and content resources. तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें लिंक की जाती हैं. देन यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं आपसे अब क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो फिर बाकी कुछ चीजें कल हम डिस्कस कर लेंगे. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर सो यू कैन आस्क. Any question that you want to discuss? No sir, कोई क्वेश्चन नहीं. समझ आ रही थी? सुन रहे थे कि नहीं? सुन भी नहीं रहे थे? नहीं सर, सुन रहे हैं. अच्छा, भी 3 मिनट्स हैं अभी भी, तो क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको फिर थोड़ा और डिस्कस करता हूँ. अच्छा, देन गोइंग द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स. तो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स में भी यही है कि एथनिकली एंड रैशली डाइवर्स लेबर फोर्स की बात है. इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द वर्क फोर्स, एजिंग लेबर फोर्स, इंक्रीज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स 55 years or greater. एजिंग लेबर वर्क फोर्स का पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है. ये एजिंग लेबर फोर्स जो लिटरेचर में लिखा गया हुआ है बहुत सी बुक्स में, ये एजिंग लेबर फोर्स जो है ये जापानीज को था. जापानीज में ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअल 55 years के हो गए थे और उनके पास यंगर्स जनरेशन जो थी वो कम थी काम करने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग थे वो सारे के सारे 50 या 50+ थे, तो यंगर लोग उनको ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलते थे. दे कंडक्टेड अ सर्वे एंड बेस्ड ऑन देयर सर्वे दे फाइंड आउट कि जी जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें ज़्यादातर एम्प्लॉइज जो हैं वो 50 and 50 से अबव के हैं, तो यंगर वहाँ पे नहीं है. पाकिस्तान में देखे जाए तो पाकिस्तान में ये मसला है ही नहीं. पाकिस्तान में ये जो यंगर पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है, यंगर पॉपुलेशन अच्छी ज़्यादा है. जनरेशनल डिफरेंसेस हैं, तो मैंने आपको बताया था उस दिन भी, मैंने जनरेशनल डिफरेंसेस पे बात की थी कि जनरेशन Z की
कि प्रायोरिटीज और जनरेशन Z की जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है और इस तरह की सारी चीजें। एथनिकली एंड रैशनली डाइवर्स लेबर फोर्स भी पाकिस्तान में नहीं है। ये जितनी एथनिकली एंड रेशली जो डाइवर्स लेबर फोर्स है, they are working either in Canada, either they are working in Australia, either they are working in USA. In some of the cases, they're working on Malaysia. They are working on Japanese in Japan. They are working in China. ये सारी जितनी examples मैंने दी हैं, या other than the England जो है, UK जो है, या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको एथनिकली एंड रेशनली डाइवर्स लेबर फोर्स मिलेगी। पाकिस्तान में आपको एथनिकली एंड रेशनली डाइवर्स लेबर फोर्स नहीं मिलेगी। तो एथनिकली एंड रेशनली डाइवर्स जब लेबर आती है ना, तो वहां पे आप अपने एम्प्लॉइज को भी उसी तरह से ट्रेन करते हैं। I still remember when I worked in the EFU, where the people who were working with me, and even in my team, the people who were working mostly are non-Muslims. वो non-Muslims थे। तो अब ये मैं नहीं कर सकता था, या मैं वहां पे ड्यूरिंग द स्पीच में ये कोट नहीं कर सकता था कि वी मुस्लिम्स, आई एम बीइंग अ मुस्लिम, आई एम प्राउड, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी are my team members or non-Muslims, so I cannot discriminate something, या मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकता जिससे मैं डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करूं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। I am running out of time. If you have any questions, you can ask directly on my WhatsApp, जो जिस WhatsApp ग्रुप में हम बन हैं। यही रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको जस्ट 10 मिनट्स और आफ्टर 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप इसको फिर सुन सकेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, so you can ask directly on the WhatsApp as well. Thank you very much. कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है? मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं सर, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.